Namaskar. In today's right angle, I just wanted to discuss something after just seeing the latest news item. That news item says that the Supreme Court, which is these days dealing with lots of cases involving the role of the governor, passed an order. I think it is something to do with Kerala government, where it has found problematic that a person under systematic pressure of the state government has been appointed the vice chancellor of a university. And interestingly, soon after this judgment came, the state governor Mr. Arif Ahmed Khan said that this is what he was objecting to right from the very beginning, but under intense pressure from the state government, and he has said even the education minister, he was forced to approve the appointment of this concerned vice chancellor. Now, why I am citing this instance is precisely because of the fact that the court, that means our apex court, Supreme Court, is dealing with similar cases on the role of the governor in those states, and it's whether it is pertaining to Delhi, that means here the lieutenant governor versus the chief minister, or whether it is Punjab, whether it is Bengal, whether it is Tamil Nadu, and whether it is Kerala. I think these are the important states which have gone to the court separately, but then I think the court is clubbing them together, and they are discussing the role of the, not exactly clubbing them together, but the issue is governor versus the elected government of those concerned states. And आप देखिए ये जितने सब स्टेट्स है वो सब होते हैं कि नॉन बीजेपी पार्टी वहाँ सब पावर में होते हैं और हैं, एंड इनका प्रॉब्लम है गवर्नर, क्योंकि गवर्नर जो होता है आप जानते हैं कि वो सेंटर्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एंड द हेड ऑफ द स्टेट होते हैं. तो ये अभी ये प्रॉब्लम हो रहा है कि कोई भी गवर्नर के साथ ये जितने हमारा अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स है उनका जो गवर्नमेंट है कभी खुश नहीं है. व्हाई इज इट सो? आई थिंक यस्टरडे द एपेक्स कोर्ट when they extended the tenure of the chief secretary here in Delhi, made an interesting remark, and it said that which of course on behalf of the lieutenant governor, I think the solicitor general, whoever was representing, I exactly don't remember, they made also this point that this is not the ये पहला बार कभी नहीं हुआ है कि सेंटर में एक सरकार है एंड स्टेट में एक डिफरेंट पार्टी का सरकार है. ये पहले भी हुआ था काफ़ी बार. ये एक डेमोक्रेसी में तो ये तो इनएविटेबल है कि द सेम पार्टी जो सेंटर में रहता है उसका सरकार तो हर स्टेट्स में नहीं हो सकता है, एंड ये कभी हुआ भी नहीं है. लेकिन ये प्रॉब्लम तो पहले नहीं हो रहा था. लाइक दे गेव द एग्जाम्पल ऑफ दिल्ली में जब बीजेपी सरकार था तब एक कांग्रेस चीफ मिनिस्टर थे, जब एक बीजेपी का सरकार यहाँ था तब एक कांग्रेस सेंट्रल रूलिंग पार्टी था, बट कितना स्मूथली चल रहा था. दैट कंसेप्ट ऑफ गिव एंड टेक इन म्यूचुअल कंसल्टेशंस, ये कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये कभी इशू भी नहीं हुआ ये. लेकिन ऑल ऑफ ए सडन ये इशू आजकल जो आप देख रहे हैं, जैसे मैं 4-5 स्टेट्स का नाम लिया है, इट इज प्रिसाइजली I think a modern phenomenon in the sense that ये सब ये मोदी जी जब आए यहाँ एंड बीजेपी सरकार में हुआ, ये 5-10 साल से ये आपको सुनने के लिए ये आ रहा है. तो पहले ऐसे कभी नहीं था.
ये क्यों हो रहा है? सो आप ये सोचते होंगे व्हेन एनी मैटर गोज टू दी कोर्ट, टू सुप्रीम कोर्ट particularly or apex court, it is implied that some finer legal issues are under contention. That's why the court is being asked to intervene and clarify these doubts, some of the constitutional or legal doubts. But unfortunately I do not know कोर्ट ने क्या जजमेंट देगा ये सब चीज़ पर, बट इन माई हम्बल ओपिनियन ये जितने ये सब पॉलिटिकल केसेस है, ये कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस कभी है ही नहीं। आप देखिए ये एक नया नारा अभी लिखा है, फेडरल फेडरल फेडरलिज्म फेडरलिज्म फेडरलिज्म। हम भी जब पढ़ते थे पॉलिटिकल साइंस का, मैं स्टूडेंट हूँ, हम आई थिंक वी ऑलवेज आर सेड दैट इंडिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कभी लिखा नहीं गया कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, इज ए यूनिटरी फेडरल सॉर्ट ऑफ थिंग। नया चीज है, इट इज हाफ फेडरल हाफ यूनिटरी, इट्स नॉट एग्जैक्टली ए फेडरल स्टेट और कंट्री लाइक से यूनाइटेड स्टेट्स इज, और इट इज नॉट एग्जैक्टली ए यूनिटरी स्टेट country that Great Britain is. It is somewhere in between, because the unfortunate circumstances during which the country was partitioned, and it had to be ensured that the unity and integrity of India is not compromised under no circumstances. So ये जो गवर्नर जो होते हैं, so they represent the center, though they are the head of the, constitutionally speaking, head of the concerned states. So there has to be give and take, and there will be some sort of Lakshman rekha. ये लक्ष्मण रेखा में क्या होता है कि obviously भाई जब इलेक्टेड गवर्नमेंट है हमारा स्टेट्स में, उनको तो पूरा सम्मान करना चाहिए, बट वो उनका जो इलेक्टेड गवर्नमेंट स्टेट्स में जो सब हैं वो एक लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करेंगे कि ये जो अभी बोलते हैं कि वो जो पास करेंगे गवर्नर को इमीडिएटली ओके कर देना चाहिए। भाई कल कोई स्टेट में ये पास कर देंगे कि हम इंडिया से अलग हो जाएंगे, एंड वो गवर्नर नहीं करेगा, यू विल सेंड इट एंड करेगा गवर्नर, तुम बोलोगे इसको ओके कर देगा। तो ये जो दिस इज ए वेरी खतरनाक, दिस इज ए वेरी डेंजरस गेम। एंड मैंने जैसे बोला कि ये कोई फाइनल कोई लीगल पॉइंट्स, कोई इश्यूज नहीं, ये सब पॉलिटिकल थिंग। द होल पॉइंट इज दैट एवरीथिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट विल डू, द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू ऑब्जेक्ट टू इट। एवरीथिंग द स्टेट गवर्नमेंट in those states is trying to do which no state government before them had ever attempted. They are proceeding in one direction that gives an impression that they are all sovereign in themselves. The sovereignty lies with the union government. It is not the state governments are not sovereign, but everywhere they are trying that they are sovereigns. For instance देखिए ये right from the independence जो गवर्नर जो होते हैं they are the chancellors of the universities in those states. तो कम से कम, बट अभी क्या होता है, आप देखिए जितने ये सब बिल, ये केरला में एक है कि बंगाल में है, ये सब पास कर देते, गवर्नर का कोई रोल न रहेगा यूनिवर्सिटी चलाने में। सो नाउ द चीफ मिनिस्टर्स विल बिकम द चांसलर्स। ये जब हमारा 70-75 साल हो गया सरकार हमारे स्वाधीनता के बाद, इससे चीज कभी दिखाई नहीं दिया था। अभी तक ये क्वेश्चन कभी उठा नहीं था। अभी जब ऑल ऑफ ए सडन उठाएगा, कोई भी गवर्नर होगा, ये तो 15 बार सोचेगा ना, भाई ये क्या कर रहे हैं। अगर वो सोचता है, ये करता है, ये लोग सीधा कोर्ट पर आ जाते हैं। सिमिलरली देयर आर सम अदर थिंग्स, एक दो को कोई छोड़ दीजिए, बाकी एवरीथिंग दे डू समथिंग, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ इन डिफाइंस
with the central government or central government's policies and directives. And it has nothing to do with law. It has everything to do with some political. इनका lawyers देखिए, ये जो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये जितने सब केसेस आप देख लो, why there is only a bunch of lawyers who go and मेरा ख्याल में तो वो लिटरली उनका दादागिरी चलता है. वो सीधा चले जाते हैं कोई जस्टिस हमारा चीफ जस्टिस के पास, यही तो आपको सुनना पड़ेगा. कौन है वो? मिस्टर कपिल सिब्बल होंगे कि मिस्टर क्या नाम है उनका, वो सिंघवी साहब हैं. एंड ये मेरा ख्याल में ये लॉ का बात कर रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बिकॉज दे ऑल आर एक्टिव पॉलिटिशियंस. तो ये जो खतरनाक जो ट्रेंड जो चल रहा है, स्टेट का बात छोड़िए, इवन सेंटर में पार्लियामेंट में कोई लॉ पास हो गया देश का करने के, तुम वहां तुम्हारा जो तुम नहीं कर सकते, वो जो लेजिस्लेटिव जो ये है आप नहीं कर सकते हो. अगर वो पास हो गया तुम उनको रोकने के लिए क्या करते हो? पार्लियामेंट में फाइट. दैट इज द प्रॉपर फोरम. यू हैव टू थ्रस्ट इट एट देयर. एंड इफ यू थिंक the particular government has taken some decisions or passed some laws that are not, you wait till your turn come, convince the people of India. After all, parliamentary form of government में the people are the real sovereign. So you go to the people of India, so they will come and change it and you rectify it. But instead of doing it, what you are trying to do, you are really damaging this concept of separation of power. And you go to the Supreme Court and Supreme Court के जाके बोलते हो ये तो सब गलत है and ये सब आप रद्द कर दीजिए. Then is this the way to build this so-called that there complaints, ये जो देख रहे हैं कि democratic institutions को सब ये लोग वीकेंड कर दिए हैं इतने. अरे भाई, अगर कोई वीकेंड कर रहा है, कोई इसको दुर्बल कर रहा है, तो सबसे ज्यादा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही का है. आप देखिए जो गवर्नर का में इशू, ये क्लियरली लिखा गया है गवर्नर के पास 4 पावर होते हैं. बेसिकली एक 4 पावर होते हैं. इन सिंपल लैंग्वेज इफ आई मे से सो, क्या होता है? जो लेजिस्लेशन लॉ को ये पास करेगा, पास करने के बाद गवर्नर उसको साइन करके उसको अप्रूव करेगा, जैसे हमारा प्रेसिडेंट करते हैं, जो बिफोर इट बिकम्स द लॉ. तो क्या होता है? तो सपोज कोई लेजिस्लेशन करता है तो आइदर गवर्नमेंट गिव्स द असेंट, गवर्नर गिव्स असेंट, मतलब ये लॉ हो गया. नहीं तो सपोज गवर्नर हैज गॉट सम पॉइंट्स, इट सेंड्स देम फॉर रिकंसिडरेशन. तो रिकंसिडरेशन होने के बाद सपोज इफ द मनी बिल, देन ऑब्वियसली द कन्वेंशन इज दैट गवर्नर हैज टू अप्रूव इट. बट देयर आर सर्टेन केसेस वेयर the Constitution of India has guaranteed that the governor may send these things for the consideration of the president. As I said, India is not exactly a federal country. ये जो फेडरलिज्म बोल रहे हैं काइंडली एंड अनफॉर्चुनेटली, जो इम्प्रेशन हमारा आजकल का, ये भी सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं बोल रहा था. बट सुप्रीम कोर्ट मीन्स व्हाट? इट इज एसेंशियली द जस्टिसेस हु आर देयर serving at present or at a given point of time of the court. And unfortunately it so happens, I think it is unfortunately, I am using the word very carefully, and I know it has got some meaning, but then I still am using these words, and I think I have got that democratic right to say कि ये जो हो रहे हैं कि they also use this word little too much and gives the impression that as if it is a federal country like the United States is. Sorry, your honors, this is not so. You cannot take away certain powers from the central government which are there because these things are enshrined in the Constitution of India, which was made by the great Pandits of those years when the country got in the independence. Of course, there have been various amendments, and that amendments have been done by the parliament, because in a parliamentary democracy it is the people who are sovereign.
वो उनका सबरीन पावर है, तो वो चेंज करेंगे. You are not there to make laws. Something that our opposition politicians or opposition governments in some states want the Supreme Court to do. They want Supreme Court to play the role of the executive. They want the Supreme Court to play the role of the legislature. This is a very, very, and unfortunately, if the Supreme Court really gets influenced under these things, which I think have less to do with law, but more to do with the politics, then I am sad to say that the future of our democracy is not bright. There is that concept of Lakshman Rekha, or the separation of powers, which is the most important feature of our constitution. There is legislature, there is executive which is accountable to the legislature. And if there are some things, the laws, the interpretation of those laws to make the clarity, that is the job of the Supreme Court. Or for that matter, actually there are many cases where the executive really through the President asked the Supreme Court for some advisory opinion, and of course the Supreme Court should come. But the way the things are being politicized by some politician lawyers, they are first and foremost politicians, then they are the lawyers. But just because they are very successful lawyers, their pressure is so much that the present judiciary, they come under their immense pressure. I think that is the perception. If I may be wrong, the Supreme Court can prove me wrong, but actually it is not happening, because they are actually entering into fields or the areas which strictly are not theirs, because by doing that they are really violating this principle of separation of powers. The judiciary in the country is not meant to make laws. The judiciary in the country is not there to run the administration. But as I said, ये जो स्टेट्स अपोजिशन पॉलिटिशियन अपोजिशन रूल्स, तो आज आप मैंने जैसे बोला कि आज गवर्नरों के साथ आप लड़ाई कर रहे हो, कल इसके करोगे, एंड द सुप्रीम कोर्ट सेज दैट नाउ दे विल बी thinking of preparing some guidelines for those guidelines that the governors will be taking into account in carrying on their respective duties. I personally think it is a very dangerous concept. How the governors will behave if the country needs some laws, these laws should be made by the Indian Parliament. And my point is that the Supreme Court should tell these parties, just after few months the national elections will be held, they should not go to the people, they should not say that these are the things we want to do. And if the people of India send their respective parties with sufficient numbers, they form the government here, they jolly well can make those laws, there is no problem. That is what democracy is all about. सो जो सब इंस्टीट्यूशन का एक मर्यादा होता है, वो मर्यादा को आप कैसे रखेंगे, ये है आज का सबसे बड़ा चैलेंज. धन्यवाद.